हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। एक ये नया बिल जो हमारा आया है, न्याय संहिता बिल, जो आईपीसी को रिप्लेस किया है, उसके ऊपर देखिए एक एडिटोरियल है। देखते हैं क्या है इसमें। द गवर्नमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द लोकसभा थ्री penal bills which is says aim to decolonize the Indian justice system has rightly exercised its prerogative. Earlier governments deterred over this more move for years. However, in matter of law making and reform, mere initiative may not be sufficient. In this case, we need to particularly focus on 3 points. The first is that penal law making and reform are serious issues which require deep deliberation and empirical validation. Second, we must keep in mind that diversity of consideration of substantive and procedural law and engage with the two sets separately. Substantive law govern how people behave. They define criminal offences and specify punishments, whereas procedural law are aimed at enforcement agency that are to provide safeguard and due process even at the worst offenders. Third, देखिए इसमें सिंपल मतलब ये है, क्रिमिनल जो आपका सब्सटेंटिव जो लॉ है वो क्रिमिनल ऑफेंस और पनिशमेंट को डिफाइन करेगा। सब्सटेंटिव लॉ है वो क्रिमिनल ऑफेंस और क्रिमिनल पनिशमेंट को डिफाइन करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, दे डिफाइन क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड स्पेसिफाई पनिशमेंट, वेयर प्रोसीजरल लॉ जो है वो आपका डिफाइन करेगा इन्फोर्समेंट एजेंसी को क्या करना चाहिए, सेफगार्ड करना चाहिए, कैसे अपने दूसरों का राइट, ये चीज़ है इसमें। थर्ड, वी नीड टू रियलाइज दैट द पीनल लॉ आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्चुअलाइजिंग द propagating a wide variety of interest as per the constitutional vision and the dominant ideology, with which interest needs protection and priority is a matter of democratic process. In view of these issues, let us analyze the भारतीय न्याय संहिता बिल IPC को इसने रिप्लेस किया है। Participation from the people, the colonial penal law had to be replaced not because it was inherently flawed, but because it lacked participation from very people for whom it was meant. क्योंकि उस समय का जो लॉ बना है उस समय हमारे लिए लॉ बना था, हम कहाँ बनाए थे उसको, हम तो नहीं बनाए थे। इसलिए जब हमारा पार्टिसिपेशन ही नहीं तो हमारे लिए लॉ कैसा। देयर इज एन इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन आइडिया एंड वैल्यूज़। ऑब्वियसली ब्रिटेन का हमारे ऊपर रूल था, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उसने बनाया है, तो फॉरेन आइडियाज़ और फॉरेन वैल्यूज़ है उसके अंदर। Therefore, a wide and diverse debate that includes the participation of governed should be integral to this exercise. Thomas Babington Macaulay had said in the House of Commons in 1833 that the basis of uniform code of law for India should be uniformity when you can have it, diversity where you must have it, but in all small certainly the ensuring penal law should be aimed at achieving the target of equal and uniform application and should be structured in precise terms to impart maximum certainty. The idea of according justice or nyay may be the ultimate end, but every kind of criminalization mean encroachment on liberties and uh, delimitation of freedoms. This task requires empirically analyzing the shift in the perception of those type of behavior that are considered undesirable and otherwise. We have recently witnessed such a shift in respect to attempt suicide, which from an offence under section 309 of the IPC is on a way to becoming a mental problem under section 115 clause 1 of the Mental Health Care Act 2017. Likewise, in Joseph Shine versus Union of India, the Supreme Court struck down the section 497 offence of adultery. Therefore, there is need to conduct a wide-ranging social audit of what constitutes undesirable behavior. Stephen Box wrote in Power, Crime and Manifestation, for too long, too many of us has been socialized to see
crime and criminals through eye of the state. While not everyone will agree on this, it underscores the value of independent and impartial body taking up task of social audit of what is undesirable behavior. Though there is an attempt to impart brevity, the tendency of retaining and adding new offences tends to offset the advantages. After the IPC, many special penal law have been enacted to deal with new emerging crimes, which could be kept out of Bharatiya Nyay Sanhita. Furthermore, serious crimes such as organized crime and terrorism could be located in existing special law or new composite law, as suggested by the Malinath Committee, could handle them. Women and children. It is a consonance with the constitutional vision enshrined in Article 15 Clause 3, Special Provision for Women and Children, and Article 51A Subclause E, renounce parties derogatory to the dignity of women, that offences against women and children has been accorded first place in the category of offence in Chapter 5 of the bill. But we get a rude shock when we realize that in the proposed offence of rape under Clause 63, sexual intercourse between a man and his wife, if the wife is above 18, is not a rape. India still seems to be guided by the colonial mindset that is reflected in Clause 359 of the Draft Penal Code 1837, which reads, "Sexual intercourse by a man with his own wife is in no case rape." Likewise, retaining clause 20 and 21 in Chapter 3, General Expectations, that relate to criminal liability in the general penal law, militates against the philosophy of special law for children that is explicitly laid down in Section 1, Clause 4 of the Juvenile Justice Act 2015. Notwithstanding anything containing in any other law of the time being in force, the provisions of this Act shall apply to all the matter concerning children in need of care and protection and children in conflict with law. The proposed penal law has certain decisive departure from the colonial chapter scheme that tied to arrange offences as per the priority intersect of the ruling class and pushes the interest of the body and property below the offence against the state and other supportive institution. But the bill has accorded precedence to bodily interest by placing them in Chapter 6, just before offences against the state. Is it possible to draw some interference from such a shift? The acid test would lie in response to the following inquiries. First, will reform fulfill the constitutional vision enriching the Article 13 Clause 2 prohibition of law against fundamental rights? Second, will the law uphold the principle of autonomy and equality? Third, will it further the fraternity guarantee of preamble? लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस आर्टिकल में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़, सब्सटेंशियल लॉ। अब देखिए सब्सटेंशियल लॉ किस चीज़ के साथ डील करती है, क्रिमिनल ऑफेंस और क्रिमिनल पनिशमेंट के साथ। दूसरी प्रोसीजरल लॉ किस चीज़ के साथ डील करती है, इन्फोर्समेंट एजेंसी जो सेफगार्ड करती है हमारे राइट्स को, सेफगार्ड करती है हमारे राइट्स को। तो इसमें डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा है, सब्सटेंशियल लॉ एंड आपका प्रोसीजरल लॉ। दूसरा आईपीसी, आईपीसी के कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए 115 सॉरी 115 नहीं है, 309 है। इसमें अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड का जो है वो है। और तीसरा एक यहाँ पे वुमेन का इशू आता है। देखिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 यहाँ पर है। अगर आप देखो 13 क्लॉज 2 यहाँ पर है। यहाँ पे ये वायलेशन ऑफ मतलब एफआर वायलेट ना हो उसके लिए है, और यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन की इक्वालिटी के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखो बताया हुआ है कि क्लॉज 359
क्लॉज 359 में साफ बोला है कि एक मैन अगर फोर्सफुली भी अपने वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर रहा है तो उसको रेप नहीं बोला जाएगा, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेक्सुअल मैरिटल रेप का क्लॉज ही इन्होंने हटा दिया, वो होना चाहिए। और सेकेंडली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 51A की आर्टिकल, देखिए क्या है। renounce parties derogatory to dignity of women, एंड सेकेंड लास्ट वन इसमें ये हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मलिनाथ कमिटी, मलिनाथ कमेटी। तो इस आर्टिकल में बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, या आपको अगर इसके ऊपर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू एंड वर्क हार्ड।